हरि ओम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु गंगा प्रवासे पुष्करणी एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकाले भवन्त्यः। हरि ओम। विष्णोर्विष्णु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु गंगा प्रवासे पुष्करणी एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकाले भवन्त्यः। विष्णोर्विष्णु ज्येष्ठे कृष्णपक्षे चैकादश्यां च रविवासरे श्रीचन्द्रमासि रेवत्यां मीने वृषेरवौ स्थितो खण्डग्रामं समागत्य गङ्गातटे करोम्यहं श्रीकनकेश्वरेशयोश्चाभिषेकं सुमनसा चतुर्वेदोक्तमन्त्रिश्च कनकधारया तथा सप्तमुखीयलक्ष्मीशे नासानस्याभिषिञ्चनं कृत्वाहं प्रातरुत्थाय चलन्नत्र समागत स्नात्वा विषानन्ते चाभिषेकं करोम्यहं श्रीकृष्णाङ्कितहुरोन्मे च शाश्वत हेमन्तशच्छविः हिमामशोभया भाति राकेशमानमन्दिरे हर्षदरीति कांसान्मे लक्ष्मीः सन्तति त्वरा समागत्य धरा मध्ये रक्षतं मानरक्षितां गौतमकश्यपगोत्री भरद्वाजेन वक्षस कौच्छसवंशजानं च सदैवास्तु सुमङ्गलं गोपीनाथमणिपुत्रा श्रीराम भीमसहितं कैलासपितृरूपाणं वैकुण्ठे चिरवाससं श्रीकृष्णकरवंशे श्रीविघ्नेश्वरकलिकनं प्रस्फुटिताश्चिरं सन्तु चन्द्रार्कोदयभूतले वासुदेवेन रेखमा पितृव्यरूपिण वासोऽस्तु नित्यवैकुण्ठे मातृकुलसहितेन गोदावरी नर्मदा च गंगा सरस्वती तथा यमुना सिंधु कावेरी सप्तैश्च च हरप्रिया हरिहरात्मकी प्रिया चिरपुण्यप्रदायिका समागत्यत्र कुर्वन्तु विश्वक्लेशस्य हरणम्। हरि ओम। अथ यजुर्वेदः प्रथममण्डलः विंशसूक्तम्। ओम अयं देवाय जन्मने स्तोमभिप्रेभिराशया अकारिरत्नधातमः य इन्द्राय वचो युजा तताख्युर्मनसा हरिषामिभिर्यज्ञमासत तख्यन्नासत्याभ्यं परिजमानं सुखं रतं तख्यन्धेनुं सवादुर्गां जुवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रारुजो यव ऋग्भवोऽभिष्ट्यकृत संगो मदासु अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वत आदित्येभिश्च राजभिः उत त्यङ्तमशङ्नव त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् अकर्म चतुरः पुनः तेनो रत्नानि धातान् त्रिरासाप्तानि
न्वते एकामेकं सुषस्तिभिः अधारयन्त वर्णयो अभजन्त सुकृत्या भागं देवेषु जज्ञियम् अथो यजुर्वेद तृतीयाध्याय मंत्र पंचदशविंशति यावत् आयामीह प्रथमो धायि धातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वाढ्यः यामाप्लायामाप्नवानो भृगावभिरुचुर्वनेषु चित्रं विभुं विषे अस्य प्रत्नामनु जूतगुं शुक्रं दुदुल्ले अल्लायः पय सहस्रासां ऋषिं तानुपा अग्नेसि तन्मङ्मे पाह्यायुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेशिर्वर्चो मे देहि अग्ने जनमे तन्मा ऊनं तन्मा आप्रुण इंधानास्त्वा साता गुं हिमा द्युमन्ता गुं समधीमहि भयस्त्वन्तो भयस्कृता गुं सहस्वन्त सहस्कृतम् अग्ने सपत्न दम्भानामदाब्धासो अदाभ्यं चित्रावशो स्वस्ति ते पारमसीय संत्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसागथाः सम्भृषेण गुं स्तुतेन संप्रियेण धाम्ना समाहमायुषा संवर्चसा संप्रजया सगुंराय स्पोषेण अग्निग्मिषीय अंधस्था अंधोव भकीयामहस्तमहोवो भकीयोर्जस्थूर्यां वो भकीय रायस्पोषस्था रायस्पोषं बुभेकीय अथ सामवेद पूर्वार्चिकाम् इंद्रपर्व खंड अष्टमः यगुंरक्यन्ते प्रचेशो वरुणो मित्रु अर्यमान किः सदाभ्यस्ते जनः गाभ्यो शृणु यथा पुरा स्वयोतरथ यावरिवस्यमहोनाम् इमास्त इन्द्र पृश्नायो घृतं दुहत आसीरन् एनामृतस्य पीब्यूषि अयाधिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत यशो मे सोम अभूव पावकान सरस्वती बाजेभिर्वाजनीवति यज्ञं वस्तुधिया वसु त इमं नाहुषीष्वा इन्द्रागुं सोमस्य तर्पयात् स न वसून्याभरात् आयाहि सुषुमाहित इन्द्र सोमपेवा इनाम एदं बहि सदो मम महित्रेणामवरस्तु दुःख्यं मित्रस्यार्यम्णः दूरदर्शं वरुणस्य त्वाता पुरुवासो वयमिन्द्र प्राणेताः अस्माश्रीस्थातर्हरिणम् अथ अथर्ववेदो प्रथमखण्डः विंशसूक्तम् अदाराश्रुद्भवतु देव सोमास्मिन् यज्ञमरुतो मृडता नः मानो विददाभिभानु असस्तिर्मानो विदद्ब्रूजिना द्वेष्याय यो अद्यसेन्युबधो अघायो नमुदीरते युवन्तं
मित्रावरुणावस्मायावयतं परि इतश्च जदमुताश्च जदबधं वरुणायावाय विमाः शर्म यच्छं वरियो यावयावधं सास इथा महां अस्यामित्रसाहो अस्तृतः न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन। अथ श्रीमद् भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकात् सप्तचत्वारिंशत् श्लोकं यावत्। त्रैगुण्यविषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत्र सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। हरि ओं श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ॐ अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलावरणं तमालम् अङ्गे कृता किल विभूतिरपङ्गलेना मङ्गल्यदान मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमद्रपा प्रणिहितानि गतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्वलेय श्यामे श्रियं सुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवी ब्रह्मदानदक्ष्य मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशानिशीतु मयि क्षणमीक्षणार्मिन्नीवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् अकेकरास्थितकनीलिकपक्मनेत्रं भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुजितस्थितकौस्तिभेय हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति जातडिजङ्गनेव मातु समातु जगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाथिनिमन्मथेन मज्जावमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकाय दद्यादयानुपमनोद्रविणम्बुधार मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विशान् दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरं नारायण प्रणयिनीनयनम्बुवा इष्टाभिशिष्टमतयोऽपि जया जया दृष्ट्याद्रिभीष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहुष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टं पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करभीष्टराय गिरिदेवतीति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भर्यशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुणि श्रुतेन स्वकर्मफलप्रसूति रतेन गुणान्नवय शक्तेन सदवनिकेतनाय पुष्टेन पुरुषोत्तमबलवाय नमस्तु नालिकनिवारणाय नमस्तु दुग्धोदयन्मूर्ते नमस्तु सोमामृतोदराय नमस्तु नारायण वल्लभाय संप्रदायकल्याणानि संप्रदानविसरोरहक्ति त्वदवन्दुतहरुणदितानि मामेव मातरं कलन्तमान्ये उदत्कटके समुपासनाविधिः सेवक संबरमणि शिष्टं मरेन्मुदे सरसिजन्यळे सुरसे धवळतमा सुगन्धं भवति हरिवल्लभमणिगति विनुमुदे दिग्धस्तिवे कनकमखावसु प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष
लोकादिनाथ गृहिणीमं कमले कमले केवलवेतं करुणापूर्वतरं अवलोकमां किञ्चनानाप्रतं स्तुवन्ति ये स्तुतिविरं भूविरण्वां त्रयीमयि त्रिपुरमद्रमां गुणिकागुरुतरो भाग्यवेगिन् भवन्ति भूपि बुद्धो भवेत् सुवर्णधरसंसङ्ग्रहनिमित्तं त्रिशन्नजपणनिमित्तं सौकवर्यशं भवेत् इति श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितकनदर्शनसम्पन्नम् ओं शङ्करे शङ्करात्मने नमो नमः ओं शङ्करे शङ्करात्मने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युमुखमामोद ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय नमो नमः नमो नमः केदारेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः त्रयंबकेश्वराय नमो नमः नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः नमो नमः कृष्णेश्वराय नमो नमः नमो नमः ओंकारेश्वराय नमो नमः नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः वैद्यनाथाय नमो नमः नमो नमः मल्लिकार्जुनेश्वराय नमो नमः नमो नमः रामेश्वराय नमो 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 नमः ओम नमो नमः खंड गंगानाथाय नमो नमः ओम नमो नमः लिंगराजाय नमो नमः नमो नमः लोकनाथाय नमो नमः ओम नमो नमः विश्वशांति कल्याणकारकाय नमो नमः ओम नमो नमः संडेश्वराय नमो नमः ओम नमो नमः श्रीपतये नमो नमः हरि ओम उग्रं वीरमालर्वतामकुनुसिंहं ओम सप्तम कुनुसिंहेन सप्तम च महालक्ष्मी नमः लक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः सर्वशान्तिं कुरु भोः सर्वेषां मङ्गलं कुरु सर्वेषां मङ्गलं कुरु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम गंगाधराय 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 नमो नमः हरि ओम। ओम संतकरं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि ओम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलसंधि कुरु कुरुगद्रगा गंगा प्रवासी पुष्करणी एतानि पुण्यतीर्थानि पूजा कालबन्ध ओम गंगा देवी नमो नमः स्वागतं माता गंगा गंगे अत्र आगत्य पूजा कुर्वन्तु शुभं कुर्वन्तु शुभं ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाय नमो नमः।